आपको दो एलिमेंट्स जिनका सम जीरो है या नहीं ये बताना है. इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन. Hello everyone. So today we are going to solve another very famous problem, which is of two pointers, and it's a very commonly asked interview question, जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. And let's see what's the question, how we can solve it, and what's the most optimal way, and what's the brute force way, and yeah. So let's explore it. So if you see on my screen, the question is basically you have given a sorted array. And you have to return two elements whether their sum is zero or not. Means आपको दो elements जिनका sum zero है या नहीं ये बताना है उस array से. Considering few constraints, let's say the first constraint is array is sorted. Okay. Another one is it दो नंबर्स ही होने चाहिए, so we cannot consider zero, so it should be two numbers only. And yeah, so we have to return true or false. Make sense? So let's see how can we solve this. What is the brute force way and what's the most optimal way? So let's go with the brute force. Let's go with the brute force way कि ब्रूट फोर्स का यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. यू हैव एन एरे इसमें हमारे पास -3, -1, 0, 3 एंड 5. हमें दो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जीरो है, और अगर ऐसा है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू. लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डू. सो हमें दो नंबर्स चाहिए. सो इफ अगर मैं इस 3 को इन सारे बचे हुए एलिमेंट से कंपेयर करूं, मींस कंप्यूट करूं कि वेदर उनको साथ सम करूं एंड बताऊं क्या इनका सम जीरो है या नहीं. हाउ? इफ आई डू -3 प्लस -1 it will be -4, which is not equal to 0. now I've compared 3 with -1. अब 3 को कंपेयर करेंगे 0 से. so -3 plus 0 is -3 again, which is not equal to 0. अब 3 को कंपेयर करेंगे 3 से, पॉजिटिव 3 से. so -3 plus 3 it will be 0, which is equals to 0. so we can return true. Make sense? Why? because हमें 3, -3 and +3, so makes sense, and the sum will be 0. so what are we doing in this? हम क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को रिमेनिंग अदर एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि क्या उनका सम 0 है या नहीं. so assuming I am doing for one number n operations, so for n numbers it's like n into n operations. so in this case what will be the time complexity? we can simply say it will be order of n square, because at worst what will happen, we will find the first with the very last element, so at worst case हम कह सकते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा, बिकॉज हमने हर एलिमेंट को रिमेनिंग एलिमेंट से किया गया. so pseudocode will be very simple. let's say for int, let me use another marker. so I can say for int I equals to 0, I less than n, I plus plus, then again for int j equals to I plus 1, j less than n, j plus plus, and if a of I plus a of j equals to 0, return true. and if not, at the bottom out of the loop we can say return false. so this is the pseudocode for the brute force way, and the TC will be
O of n square. Now comes the question, can we optimize this? Given an hint, हमें पता है array sorted है. So how can we build intuition कि हम इस चीज का यूज कर सकें एंड दो पॉइंटर्स का यूज कर सकें, बिकॉज वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स, तो हम किसी तरीके से दो पॉइंटर्स का यूज कर सकें एंड वी solve this problem in a optimized way. So how? Let's see how. Let's try to build the intuition behind it. कि हमारे पास जो array है that is -3 -1 0 3 5. So किसी भी दो नंबर का सम जीरो होने का मतलब है वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड द अनदर मस्ट बी नेगेटिव. दैट मीन्स कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. सो इफ यू चूज टू पॉइंटर्स, पहले को रखो इनिशियल पोजीशन पे बिकॉज नेगेटिव में सबसे पहले नंबर ये, एंड दूसरे को रखो लास्ट में बिकॉज पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर ये. सो व्हाट आर द चांसेस, क्या चांसेस हैं कि इन दोनों का सम जीरो होगा? बिकॉज नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर ये एंड पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर ये. Like in terms of if you remove the signs, that will be the biggest number. So chances हैं कि इन दोनों का sum zero हो. And let's see how this approach is going to work. ये कैसे work करेगा? So let's see if a of p1 is equals to a of p2. This is the base case. We can say return true because we are done. If that's not the case, if that is not the case, let's say else if. अगला केस क्या हो सकता है? सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक. सो दिस विल बी लाइक this will be like plus a of p2 equals to 0. Correct. Now what can be the other case? या तो जीरो होगा, अदरवाइज इनका सम जीरो से बड़ा होगा. करेक्ट. सो इस केस में क्या हुआ? -3 +5 वी गॉट 2 विच इज ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 मिलना दैट मीन्स कि अभी भी हमारे पास एक नंबर बड़ा है. सो हमें उस नंबर को कम करना है. सो वी कैन सिंपली से वी हैव 5 एज द नंबर विच इज ग्रेटर देन. Because of this 5 we are getting 2 as a result. How about if we move this pointer? So that means अगर हमने इस नंबर को कम किया, eventually हमारा जो sum है वो reduce हो जाएगा. So in this case we can say we have to do p2 minus minus, and now the remaining else we can simply say we have to do p1 plus plus, and that's it. That's the case. Let's see how it works. Let's see on a real example how it's going to work. So I have 3 -1 0 3 5, one pointer here and one pointer here. So -3 plus 5, that is 2 greater than 0. So we have to decrement this pointer. So this will become at this position. Now -3 plus 3, we got the answer. We are going to return true. Let's consider another example. So let's consider an example. Let's say I have -3 -1 0 1 4 5. Make sense? Now p1 is here, p2 is here. Now -3 plus 5, we got 2 which is greater than 0. So I am going to decrement this pointer. Now -3 plus 4, we got 1 which is again greater than 0. Again decrement this pointer. Now -3 plus 1, we got -2 which is less than 0. Now this time we are going to, हम इस वाले पॉइंटर को मूव करेंगे. Now we got this. Now -1 plus 1, we got 0. Return 2. That's it. Now how about this approach कि with the help of two pointers हमने इस क्वेश्चन को एक सिंगल आइटरेशन में सॉल्व किया. So we can say the time complexity is nothing but OOF
big O of n, and the space complexity of O1 because we are not using any extra space. So that's it guys, that's how we can solve this.